Hello students, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. Our subject, Entrepreneurial Development with respect to your semester 5 in TYBBA. Today in this section, we will learn about Intrapreneur. Till now, we have learned about entrepreneur. Now, who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who develops innovative ideas, who has organizing skill, who has a risk taker ability. Today, in this section, we will learn about the general concept of intrapreneur. An intrapreneur is an employee who is tasked with developing an innovative ideas or a project within a company. इसका यही मतलब होता है कि इंटरप्रेन्योर को हैज एन एम्प्लॉय ही ट्रीट किया जाता है, उसको ऐसा टास्क दिया जाता है जहां पे उसको कंटिन्यूस ही हैज टू डेवलप अ इनोवेटिव आइडियाज का तो ही हैज टू डेवलप न्यू प्रोजेक्ट विद इन द कंपनी ओनली. कंपनी के अंदर ही वो काम करेगा, कंपनी में ही न्यू आइडियाज जो है वो डेवलप करेगा और न्यू प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेगा. सो द इंटरप्रेन्योर मे नॉट फेस द आउटसाइड रिस्क. जो रिस्क जो है आपका एक्सटर्नल में, वो रिस्क वो बैन नहीं करेगा और ही मे नॉट रीप द आउटसाइड रिवॉर्ड्स ऑल्सो. उसको कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा लाइक एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneurs are self-motivated. They are self-motivated, proactive and action-oriented people who take the initiative to pursue an innovative product or a service within the company only. वो अपने कंपनी में हैज एन एम्प्लॉय वो काम कर रहा है और हैज एन एम्प्लॉय ओनली वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज जो है वो डेवलप कर रहा है. लाइक एन एंटरप्रेन्योर ही इज डेवलपिंग एन न्यू आइडियाज. He is taking a risk as per the idea he has generated. इसलिए उसको हम इंट्राप्रेन्योर के बेस में आइडेंटिफाई करेंगे. आया समझ में? An entrepreneur knew failure does not have a personal cost. इंटरप्रेन्योर को पता है कि फेलियर जो भी होगा, सपोज आइडिया जनरेट हुआ है, वो आइडिया इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जो फेलियर होने वाला है वो फेलियर से उसका कोई भी पर्सनल कॉस्ट उसको बेयर नहीं करना पड़ेगा लाइक एंटरप्रेन्योर. सो सिंस ऑर्गेनाइजेशन विल ऑब्जर्व, सारे जो फेलियर होगा वो कौन बेयर करेगा? सारे फेलियर जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन विल ऑब्जर्व ऑल द लॉसेस दैट अराइजेस फ्रॉम फेलियर. So, an entrepreneur know failure does not have a personal cost as it does for an entrepreneur. Entrepreneur को personal barrier, personal cost को bear करना पड़ेगा, but entrepreneur को नहीं. Since the organization, entrepreneur को पता है कि if idea is not being implemented properly, तो जो भी losses हुआ वो bear कौन करेगा? Organization, which is arises from your failure of idea generation. So, according to Gifford, Intrapreneur is an entrepreneur within an already established organization. जो organization already setup है उसमें has an employee आप काम कर रहे हो, new ideas आप develop कर रहे हो, उसको उस बंदे को हम बोलेंगे intrapreneur. They don't bear any cost. An entrepreneur is nothing but an employee who is working in an organization and who is developing an idea for an organization. That is your intrapreneur. Now let us see the basic difference between entrepreneur and intrapreneur. What is the basic difference between entrepreneur and intrapreneur? That question may be arises in your mind. So let us see this basic difference between entrepreneur and intrapreneur. First point is dependency. First point is dependency. As an entrepreneur, you are independent because you are working for your own self, for your own entrepreneurship. So you are independent for any work which you are doing. As an entrepreneur, you are dependent on your organization because if you have an idea and that idea you have put in front of an organization, whether it will be implemented or not, that is a question mark because you are dependent on the organization. Next one is raising of funds. Funds are being raised by its own by your entrepreneur. Entrepreneur is fully responsible for raising of the fund. But in intrapreneur, funds are not raised by him because organization is responsible for raising the funds. So funds are not being raised by an intrapreneur.
So first point, dependency. Entrepreneur is totally independent for his own work. Intrapreneur is dependent on the organization. Second, raising of funds. Entrepreneur is totally responsible for raising of the fund by its own. And second, entrepreneur में क्या होगा? Funds are not raised by entrepreneur. Now let's see the another point, that is risk. Entrepreneur is responsible for all type of risks, but as an entrepreneur you will not fully bear all the risks. देखिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को सारे टाइप्स के रिस्क जो है उसको खुद को बेयर करना पड़ेगा, बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू डज नॉट हैव टू बेयर द रिस्क. ऑपरेशन एंड एंटरप्रेन्योर ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड. एंटरप्रेन्योर जो बंदा होगा वो ऑपरेट होगा आउटसाइड एंड इनसाइड ऑल्सो, बट मोस्टली वो आउटसाइड से ज्यादा काम करेगा. एंड एंटरप्रेन्योर वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. ही विल नेवर work from outside, but entrepreneur can be work from inside and outside both, and entrepreneur can work within the organization itself. That is a basic difference between your entrepreneur and entrepreneur. Now let's see basic relation between a entrepreneur and entrepreneurship. Now what is entrepreneurship? You are already aware. Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or a group of individuals undertaken to initiative, maintain your profit by production or a distribution of economic goods and service. आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इंडिविजुअल का तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं. इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडरटेक करते हैं, इनिशिएटिव करते हैं और अपने प्रॉफिट जनरेट करते हैं बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपना ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, पहले ही हमने क्लियर करवाया था कि बेसिक रिलेशन बिटवीन योर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज. That video you can again check out and watch out and can clear about the basic relation between entrepreneur, entrepreneurship and enterprise. So entrepreneur बंदा होता है, entrepreneurship में वही बंदा कोई प्रोसेस का तो एक्शन करता है, उसको बोलते हैं entrepreneurship. तो entrepreneurship is nothing but a purposeful activity by an individual, a group of individual, उसको बोलते हैं entrepreneurship. Now let's see basic relation between entrepreneur and entrepreneurship. The basic relation between entrepreneur and entrepreneurship is that first one, entrepreneur को हम बोलेंगे person because he is a person, but entrepreneurship में क्या करते हैं वो बंदा some process का तो action जो है वो करता है, some process और action he need to be perform. तो entrepreneur is a person, entrepreneurship में वही बंदा जो है some process का तो action जो होता है वो करता है. उसके बाद नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर इज ऑर्गेनाइजर, वो ऑर्गेनाइजर है एंटरप्रेन्योरशिप का. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा. ठीक है, सो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ? प्रोसेस. एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन. See, it is not a difference, it is a relation. So be clear कि it is a relation between entrepreneur and entrepreneurship. It is not a difference. Next, एंटरप्रेन्योर क्या होगा? वो इनोवेटर होगा. तो एंटरप्रेन्योरशिप में वही इनोवेटर बंदा जो है वो क्या कर रहा है? इनोवेशन कर रहा है. एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर हुआ तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो रहा है? वही मोटिवेटर मोटिवेशन कर रहा है. तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा? मोटिवेशन होगा. लाइक दैट दे कैन बी लाइक लीडर हुआ एंटरप्रेन्योर, तो वो क्या हो जाए? एंटरप्रेन्योरशिप में लीडरशिप हो जाएगा. एंटरप्रेन्योर क्रिएटर होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो जाएगा? क्रिएशन होगा. तो दैट इज अ बेसिक रिलेशन अमॉन्ग द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? प्रोसेस. एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन. एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? मोटिवेशन. सो दैट इज योर बेसिक रिलेशन बिटवीन योर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Hope you are clear with the concept of intrapreneur. Who is entrepreneur? Entrepreneur is an employee who is working within the organization for developing a new ideas or a new project. Then you have learned about a basic difference between entrepreneur and entrepreneur, and last you have learned about the relation among the entrepreneur and entrepreneurship. Hope you are clear with the three topics which are covered in this section. Next we will learn about your rural entrepreneurship in your next section, in your next video. Thank you, students.